ओके गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कौन आज रहा कथा जे वर्तमान कथा हो हाउ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कॉस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मु कहितले ऑलरेडी फास्ट रो डिजीज जेतले हम कथा हवा ताले सेटा दी प्रकार कथा है जे गोटे होची कोन ना कम्युनिकेबल डिजीज आ गोटे हला नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज माने व्हिच कैन इन्फेक्ट थ्रू एयर और विथ द कांटेक्ट ये सब जाक गुटी गुटी के हमें डिस्कस करथिले ठीक। तापर आउ कोन डिस्कस करथिले किछटा टॉपिक बुझते सेटा होची पैथोजेन गोटे मन पकई दियो पैथोजेन का कहंती। तापर आउ गोटे डिस्कस करथिले वेक्टर ठीक बहुत कम कम टॉपिक डिस्कस करथिले कि जेतिक टॉपिक डिस्कस करथिले से सब को पूरा भल से मन रखियो सेटा को कोन करिवो यूज करिवो तुम जो अपकमिंग एग्जाम में ताको यूज करिवो। चलो तापर आसीबो कोन तापर आसीला कम्युनिकेबल डिजीज को जेतबे हमें इन्फेक्ट हुए से एयर वाटर जहाँ द्वारा भी इन्फेक्ट हो पार किंतु नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ठीक केमिति इन्फेक्ट हुए केमिति सेटा कौन हुए इनहेरिट हुए सेटा से कहिछि ठीक। देखो कौन कहला वी लर्न नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक कैंसर डायबिटीज अस्थमा आर लिंक्ड टू लाइफस्टाइल डाइट और एनवायरनमेंट ठीक से कौन कहला नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रही एनसीडी ये कहा कहा को अफेक्ट कर माने केमिति हुए फास्ट होची लाइफस्टाइल तुम जे डेली फास्ट फूड खाइबो तले कोन हो तुमको डायबिटीज वगैरह हबो तो लाइफस्टाइल रो तुम जो रहिला सेटा अफेक्ट करला डाइट कोन खाउचो सेटा भी ये करे लाइफस्टाइल ता जो तुम स्लीप हैबिट खराब रहिला मन कर तुम राती 12टा गोटे सोइबो रील्स फिल्स देखी तो ऑटोमेटिकली कोन हो स्लीप साइकिल खराब होला लाइफस्टाइल खराब होला माने तुम कोन हो रोगोटा हो तो सेठी तुम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आसीबो। तापर आसला कोन एनवायरनमेंट केमति रहउछ जे तुम साइड रे सब ना नर्दमा सब अत्यंत अपरिष्कार जगह तुम रहउछ ता माने तुम कोन हबो ऑटोमेटिकली डिजीज हबो को प्रकार डिजीज हबो जो प्रकार डिजीज तुमरो हुए अपरिष्कार जगह रहि जता होई जाय गला ये तो हबो। तापर आसला कोन दे आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया सेटा सब मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया इंडिया रो सब मोस्ट कॉमन डेथ होची कोन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रे डेथ ठीक है। चलो इन ग्रेड 6 यू लर्न अबाउट डिजीज लाइक स्कर्वी एनीमिया गोटा ठीक है। ये जो तीनटा जिंस क्लास 6 रे जो पढ़ी थिलो ए तीनटा जिंस विषय रे मत तमे कहबो ठीक है कमेंट साइज रे हो किंबा खाता रे लेखिको ए जिंस मते तमे कहबो ठीक। चलो बही देखो ये देखो किछ असुविधा नहीं किंतु तमे आउ धरे बही देखि टे करथो देखि को तापर आसला कोन व्हिच आर कॉज्ड बाय लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स इन डाइट दीज आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी माने किछि भी तमरो जदी कम रहला मन कर गोटे खाद्य खाउछु ता देरे 4-5 प्रकार डिजीज कोन रहया दरकार विटामिन्स रहया दरकार तापर हमरो मिनरल्स रहया दरकार सब रहया दरकार किंतु जदी या भीतर किछि भी तमरो डेफिशिएंसी हला तो सही अनुसार तुम कोन हबो डेफिशिएंसी डिजीज हबो जेमति कि स्कर्वी एनीमिया वगैरह वगैरह ठीक। देयर एंड आर आल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तो ए मानको भी तुम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहि परिबो। Diseases such as cancer, diabetes, and asthma may often persist for a long time, more than 3 months, are referred to chronic disease. Wow. पचारिबो whom do you call chronic disease? ठीक ये क्वेश्चन आंसर टा एट डिजीज सच एज कैंसर डायबिटीज एंड अस्थमा may often persist for a long time that should be 3 months more than 3 months are referred to chronic disease पचारिबो what do you mean by chronic disease or whom do you call chronic disease वगैरह वगैरह पचारले कोन करिवो ए आंसर टा लिखिबो तो एटा खाता रे नोट डाउन करिवो। चलो diabetes is a common disease which is becoming more prevalent in adults as well as children. In fact, India now has one of the highest number of people with diabetes in the world. If often develops due to a combination of hormonal imbalance, unhealthy eating habits, lack of physical activity, being overweight or obesity or obese and other reasons. तो से कौन कहला ना डायबिटीज इज ए कॉमन डिजीज ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट याकू अंडरलाइन करिवो डायबिटीज इज ए कॉमन डिजीज व्हिच इज बिकमिंग मोर प्रिवेलेंट इन एडल्ट्स
as well as children's माने डायबिटीज टा adult और children मान भीतर बहुत देखा जाउची. In fact India now has the one of the highest number of people who with diabetes in the world रो सब highest diabetes patient जदी कोठी अछन से होचंदी इंडिया रे. ठीक अछि मन रखिबो कारण पचारिबो what is the disease NCD disease diabetes and give us a small briefing about diabetes देले ए जो क्वेश्चन टा 2 मार्क को 3 मार्क हेई पारिबो. ठीक जन करी ए जिंसटा खाली माइंड रे रखिथिबो जे कोन पई होउची डायबिटीज. तीनटा रीजन अछि. फर्स्ट होउची कोन ना जेतो डायबिटीज कथा पचारिबो ताले फर्स्ट कहबो डायबिटीज इज ए मोस्ट कॉमन disease in India. First, India has highest number of patient in the world who are suffering from diabetes. माने डायबिटीज रे सफर करथुवा लोक इंडिया रे सर्वाधिक यदि हम वर्ल्ड कथा कहबा. ठीक सेकंड पॉइंट रहला. थर्ड पॉइंट कोन करिवो थर्ड पॉइंट कहि परिवो जे it often develops or it causes due to काहे की हुए. फर्स्ट होची हार्मोनल इम्बैलेंस, डाइट फैक्टर, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. तापर आसीबो कोन ना ओवरवेट और ओबेसिटी और ओबीस और अदर रीजंस. ठीक तुमको जदी पचारियो व्हाट इज द रीजन ऑफ डायबिटीज ताल तमरे एठी दीटा क्वेश्चन आछि. गोटेला इन डायबिटीज कोन व्हाट इज डायबिटीज जदी आसला से क्वेश्चन में आंसर दे परिबो. नहले एई जो पॉइंटटा why diabetes what is the reason of diabetes ठीक दे परिबो आराम से. तापरे एक्टिविटी हमर बेसी एक्टिविटी दरकार होनी. ओबेसिटी आसला कोन ना नेम द कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज. तो फर्स्ट होची कोन ना ओबेसिटी. ओबेसिटी माने कोन ना मोटापा अधिक खाइले जहा हुए सही जो अवस्था. ईटिंग ए बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली एटा होची ताकू बंचिबार बा लाइफस्टाइल चेंज करिबार कोन हुए. ठीक सिम्पटम कोन ओबेसिटी तो मोटा आइले सिम्पटम ही से गोटा आ किछ नै. तापर असला कोन डायबिटीज. डायबिटीज रो कोन रहिछि ता फर्स्ट होछि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन माने तुमको सब बेले जीवा बाथरूम जति जीवो ताले डायबिटीज हे जोल जानिबो. तापर एक्सेसिव थ्रस्ट माने अधिक पानी पियो किछा हबो. तापर वेट लॉस माने तमरो विथ ड्यू रेस्पेक्ट माने तमरो जेंति कोन तमे 2 मास रे 20 किलो कमी गलो 3 मास रे 30 किलो कमी गलो एम जदी हला ताले एक्सेसिव वेट लॉस हेले तमे डायबिटीज अछि बोल जानिबो. टायर्डनेस आसीबो जेतेबेले जहा बस्तु तो टायर्ड लागुथो बोल लागुनथो सेटा. तबे स्लो हीलिंग जेतेबेले तम किछि भी गोटे वुंड हला बा खंडिया हला. ठीक तमर जो खंडिया हला तो मन रखिबो किछटा इंग्लिश वर्ड मन रखियो. खंडिया जदी हला बा वुंड हला खंडिया रो इंग्लिश टा होची कोन वुंड हला ताले कोन हो that will take time to recover. तुम रिकवर होबा चाहलो that will take time. तो सेटा स्लो हीलिंग. तापरे हाई ब्लड प्रेशर ले भी कोन हो तम सिम्पटम टा होची कोन मुंड फुंड बिंदेबो बुलेबो तापरे राग बढ़ी जीवो ए जिंस हबो. ठीक तो ये सब जानिबा दरकार. तो तुम पचारियो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एनसीडी रो एग्जांपल दियो व्हिच इज रिलेटेड टू लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज. तो तुम तीनटा दे परिबो ओबेसिटी डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर. चला तापर असला कोन डॉक्टर कमला Randevi was a pioneering biochemical researcher. She studied how hormones and certain viruses linked to cancer, helping improve its treatment and prevention work. Also showed how tobacco diet and pollution can raise risk of cancer, highlighting the importance of unhealthy lifestyle. Okay, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको जानिया दरकार हु इज डॉक्टर कमला राणा देवी. इंग्लिश रे जहा लेखन मा गंगे जानते नहीं कमला राणा देवी पढ़े दे परिबो. तापरे 1917 ने तांको जन्म होइतला 2001 पर्यंत से थिली. एटा होची एक्स्ट्रा नॉलेज जदी जो मन रखिबो भलो कथा मन रख परिबनी तार किछ असुविधा नै. ओके तापर असला कना हाउ टू प्रिवेंट कंट्रोल डिजीजेस. तो केमि तमे सेटा प्रिवेंट करिवो ना कंट्रोल डिजीजेस कोन प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीजेस ता माने होजी कोन ना प्रिवेंट माने तांको हबा पूर्व ताको बंद करबा मतलब आसुजी डिजीज ता ता पूर्व बंद करी तल कंट्रोल करबो जदी वांस हे जाईची बहुत जगह हे जाईची तल तो कोन कमी की कोन छोटो करबो. तो सेही जिंस होची कथा प्रिवेंट एंड कंट्रोल. तो समस्त गोटे बढ़िया वर्ड ता सेठी कहला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो चिकित्सा अपेक्षा तुम प्रिवेंशन करवाटा बेटर.
से जिनस आम कथा रहिबो इट इज इंपोर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज केमिति करिवो ठीक कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रु केमिति तमे बाहर करिसो सेटा से कहिछि ठीक अछि आरंभ करिया बता से गुड़ाए गप लिखी टिके पढ़ा जो देखा मुझे बड़ कर दूसरी ओडिशा कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन ओडिशा रे गोटे कौन होता ना कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन होता कौन से इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट ओडिशा कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपेन हेल्प मोर पीपल बिल्ड एंड यूज टॉयलेट्स दिस रिड्यूस्ड ओपन इंफेक्शन significantly and improved child health with fewer cases of diarrhea and infection. What do you infer from this case study? Simple steps like good sanitation can greatly reduce the spread of communicable disease. Find about such community campaigns held in our location. Share in your class and discuss with your peers about the impact of such initiative. ओके से कौन कहला जे भद्रक रे गोटे एमितिया गोटे कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपेन माने बहुत सारा लोगों को सैनिटाइज करागला बा सैनिटेशन इन द सेंस खाली जाई कि सैनिटाइजर दे दे कि हाथ धोई द्वारा न सैनिटेशन प्रोग्राम माने केमिति क्लीनलीनेस सेठी एम्पावर हबो बा सेठी केमिति सफा सुतरा रहबो से जिंस को देखाला तो सेठी कोन कला ना से गोटे ऑर्गेनाइजेशन बा से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जाई कि सेठी समस्त घरे कोन करदला टॉयलेट वगैरह तैयारी करदला तो ऑटोमेटिकली कोन ना सेठी ताकू तैयारी कर सारिया परे हेल्थ जो फैक्टर रहला सेटा धीरे धीरे कोन इंप्रूव होबो लागला से जिंस रहला चलो तापर असला कोन एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीजेस तो बॉडी रे एबिलिटी कोन टू फाइट डिजीजेस you would have noticed that some people get sick more frequently or than others. Although living in a similar environment, do you know why? The natural ability of our body to fight diseases in known as immunity. ठीक है क्वेश्चन आसो व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी को बेसी गारा पकेबन कारण ऑलरेडी लिखि देछि तुमको बही तो तुम याको बेसी गारा पका our body has a special system called immune system that helps to fight against diseases पचारिबो कोन व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी और व्हाट डू यू मीन बाय इम्यून सिस्टम कोन ना हम बॉडी रे गोटे एमितिया बैक्टीरिया अछि एमितिया वायरस अछि जो कि हमकु सब प्रकार जो डिजीज रु रक्षा करे सेटा कहंदी इम्यूनिटी सिस्टम बा इम्यूनिटी होची हमर ओन सर्विंग सोल्जर कहि परिबो निजर जो कहंदी हम बॉडी भीतर गोटे सोल्जर अछि जे कि लडुची समस्त संगे सेंतिया कहि परिबो ठीक चलो यदि एटा बुझी परिबोनी ताले गोटे थोड़ा आउथरे पचार दो हम देखो आउथरे कहि दे You might have taken some drops of injection in your childhood to protect yourself from certain diseases such as polio, measles, tetanus, and hepatitis. These are vaccines that help to prevent serious infection caused by virus and bacteria. ठीक है तमे जो नेउचो टीटी वा वैक्सीन्स काहे कि नोचो why you take vaccines तम क्वेश्चन आसला ताले कोन आसीबो because to prevent the diseases like polio, measles, tetanus, and hepatitis. These vaccines that help to prevent serious infections caused by virus and bacteria. The vaccine helps our body to fight certain diseases by training the immune system to recognize and attack harmful germs, providing what is known as acquired immunity. Okay, ठीक है मतलब बुझो ठीक तम बॉडीटा अछि मु केमिति वैक्सीन रो एक्चुअल थ्योरीटा कोन तम बुझो वैक्सीन रो एक्चुअल थ्योरी होची तम बॉडी अछि तम बॉडी भीतर बेसी किछि वायरस जाई नै पर्यंत काई ना छुआ छ कोन जाई नै ठीक हठात कोन हबो तमको गोटे एग्जांपल होची हठात तम कोन करिवि ना मु 10th क्लास रो वर्तमान तम 8th क्लास रे पढु हठात तम गोटे 10th क्लास रो प्रॉब्लम दे देली तमे कोन करिवो संग संगे पैनिक हेकी ताको छाड़ देई घर को पळेबो कबे ना मु पाठ पढिबिनी किंतु जदि हठात मु तुम गोटे 3 क्लास रो तमे 8 क्लास रे पढछ 3rd क्लास रो गोटे एग्जांपल देली बा 3rd क्लास रो गोटे मैथ देली तमे कोन करिवो से 3rd क्लास रो मैथ को सॉल्व करियो ट्राई करिवो तो 3rd क्लास पर मु 4th क्लास देली 4th देला पर 5th देली 5 देला पर 6 plus 7 7 plus 8 plus 9 तापर 10 देली ताले ऑटोमेटिकली तुम कोन करिवो माइंड सेटि पे सेटअप हो जाइथिबो जे एमडी को मते प्रोसेस रे करियर अछि तो वैक्सीन भी सही वैक्सीन होची कोन ना सी डिजीज मानकर गोटे छोटी अमाउंट तुम बॉडी भीतर छडाबो
ठीक देखियो वैक्सीन देला पर तुम ज्वर होइतो एइति जे तमर जो मेटाबॉलिज्म अछि तमर जो इम्यूनिटी अछि से ता संग लढिया पे ट्राई करूछि तो लढी सारला पर जानि गला जे ये माह से एमतिया जतोले सेकंड टाइम सेमतिया वायरस टे आसीबो तो से हार्मोन से सिक्रेट करी कोन गला मार दबो बुझे होछि कथा तो जो अनुसार इम्यून सिस्टम क्रिएट हो से अनुसार तमरो अटैक करियर पावर आसीबो से सही कथा कहला तो वैक्सीन कोन पय हेल्प करूछि ठीक तो व्हाट डू यू मीन बाय द एक्वायर्ड इम्यूनिटी पचरा हबो ताहले मन रखिबो कोन कहइबो ना द इम्यून सिस्टम trained to attack harmful germs and that is called acquired immunity. Protection develops after exposure to a pathogen or a vaccine. Vaccine can be made in different ways from weakened or dead pathogens like virus and bacteria or from inactive or harmless parts of the pathogen. Some newer vaccines instruct our own body cells. ठीक है मैं से कथा कहली से acquired immune system to make a harmless part of the germ which our immune system then learns to fight. For example, a tetanus shot often given after an injury protects against infection by the tetanus causing bacteria. It contains an inactive bacteria toxin that helps immune system to develop protection without using the disease. Do you know when the first vaccine was discovered? Okay, good a second here. फर्स्ट वैक्सीन केबे डिस्कवर होइतला सेटा से पचाउछ ठीक सेटा हमर परे तमर जोड़े गूगल सर्च रील्स देखिया बदले कोन करिवो गूगल सर्च करिवो एटा मते कहइवो चलो हमर चैप्टर ऊपर जिवा चैप्टर ऊपर कोन बेला ना एडवर्ड जेनर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर किए सेटा जानिबो परे किंतु वर्तमान जानो जे स्मॉल पॉक्स कोन स्मॉल पॉक्स वाज डेडली डिजीज दैट कॉजेस blister and killed millions. A milder disease called cowpox, seen in cows, could also infect humans. In the late 1700 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କଣ ନା କାଉପକ୍ସ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ସ୍ମଲ ପକ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଆମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଗଲା ଆସିକି ଘର କରିଦେଲା ବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସି ରହିଲା English doctor Edward Jenner discovered that people who had cowpox did not get smallpox. This led to invention of the okay sorry এটা ভুল কইদেলি ओके चलो cowpox आगुरु थिला ठीक cowpox टा काउ मानक होतला किंतु जेतेबेले आसले स्मॉल पॉक्स पाकु जेतेबेले समस्त से मारुथला से समय देखिले से जो जो लोक मानकु काउ पॉक्स हेची से लोक मानकु स्मॉल पॉक्स आउ हेनी स्मॉल पॉक्स हेनी तो सेठी से कोन देखिले सेटा को से इन्वेंट करले of the first vaccine and help to protect people from smallpox ठीक तो से कौन कले से कही केमी तमे think like a scientist केमी तमे गोटा साइंटिस्ट वाला observation Jenner observed that milkmaids who had cowpox did not catch smallpox likely because two viruses are related तो फास्ट देखिले जो माने सब मिल्कमेड अछंदी बा जो माने सब गौड़ अछंदी से माने को आ स्मॉल पॉक्स होउनी समस्त को हेगला स्मॉल पॉक्स तो गौड़ मानु गय होउनी से माने कोन हिची ना काउ पॉक्स हितला तो माने ता माने काउ पॉक्स हेले कोन हबो ना स्मॉल पॉक्स आउ हबो नाही से बुझी गले तापर से कोन करे ना हाइपोथेसिस माने कंटेंट इन द तो काउपॉक्स भितर कौन कौन अच्छी कंटेंट कौन कौन सब अछंदी बैक्टीरिया तांको बुझेइला माने बुझ साइला पर जानला जे सेटा होची स्मॉल पॉक्स जो ब्लिस्टर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स तो सेटा काउपॉक्स भितर जो पैथोजेन टा अछि से पैथोजेन ना मते हेल्प करिवो कोन करिया पे मते हेल्प करिवो स्मॉल पॉक्स को रोकिया पे तापर एक्सपेरिमेंटेशन माने से किछटा काउपॉक्स जो छोट छोट ये पिला मानू देला ठीक
result रे कौन गला ना he found that people who are infected with cowpox sap were now resistant to smallpox जो माने cowpox को माने भल से जानी गले बा ताको टैकल करी गले से smallpox को टैकल करी गले कथा सरला तापर आसला कोन application mass vaccination eventually helped to eradicate smallpox worldwide ठीक है mass vaccination माने समस्त को से vaccination ता दिया गला ठीक है तापर eventually helped to eradicate माने कमेइबा बा नाश करवा स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड विश्व स्तर रे सेटा स्मॉल पॉक्स को कमला इरेडिकेट कर देला तापर असला कोना वैक्सीन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ways to protect people of all ages from infants to the elderly against many serious diseases they help to prevent illness reduce the spread of infection and save millions of lives every year it is important to remember that vaccines are preventive not curative they can help minimize serious diseases before they happen but do not treat them once someone is already sick some people may fear or doubt vaccines but scientists and doctors carefully test them for safety getting vaccinated not only protects you but also people around you vaccination टा जो कहला why we should vaccinate तो एठी से इनछरा लेखा है ठीक लेखि पारिबो न लेखिले भी चलिबो कि सेठी कहिचे या जे वैक्सीन बहुत लोक को प्रोटेक्ट करूची फ्रॉम ऑल एजेस माने सब प्रकार एज रो इन्फेंट माने कोन ना इन्फेंट माने छोट छुआ ठीक चाइल्ड चाइल्ड को कहते इन्फेंट ठीक तापरे एल्डरली माने जानि छ बुढ़ा अगेंस्ट मेनी सीरियस डिजीजेस बहुत सीरियस डिजीज दे हेल्प टू प्रिवेंट इलनेस से माने जो इलनेस रही ताको प्रिवेंट करिया को बहुत सहायता करंदी रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेड रो रक्षा करंदी तापर कोन करंदी से मिलियंस ऑफ लाइव्स एवरी ईयर प्रति वर्ष लक्ष लक्ष अधिक लोकंकर से जीवन बंचाती इट इज इंपोर्टेंट टू रिमेंबर दैट वैक्सीन्स आर प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव क्यूरेटिव माने तैयारी करंदी सेटा प्रिवेंटिव माने प्रिवेंशन माने ताको हबा पूर्व रोकिया पई प्रचेष्टा करंदी दे कैन हेल्प मिनिमाइज सीरियस डिजीजेस जे गोटे सीरियस डिजीजेस टाको मिनिमाइज करिया पई ट्राई करिवो किंतु जणे जदी सिक अछि बा जणे जदी ऑलरेडी रोगिना अछि ताको तापर किछि फरक पड़िबो ठीक है चलो India's role in vaccine production. India is one of the world's largest vaccine producer. If it manufactures vaccines on a massive scale and supplies them to many countries. Indian vaccine companies played a key role during COVID-19 pandemic and continue to support global health efforts. Yes, India is one of the largest vaccine supplier. मन रखिया दरकार ओके चलो उसके बाद कौन महाराजा किशन बान को जानिया दरकार कहीं कि ना ही इज ए डॉक्टर एंड ए साइंटिस्ट secretary of department of biotechnology he helped to promote science innovation in india he played a key role in developing the rotavirus vaccine कौन जब जानिछो ताले भलो कथा जदि जानि ना ताले जानो which protects children from diarrhea रो जदि प्रिवेंट करिया पई तो पिला मानु के साहाय्य करे ताले rotavirus vaccine He believed in using research to create affordable healthcare and made big difference in India's health and biotechnology sector. सब होता रहता है तापर इसला कोना ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस ठीक ठीक है संगलानी अथोंडा ओके अपन इज एनफ जे हेति कि मुंडर लोड नै जीव यदि भलो कथा कि लोड नियो बेसी लोड नले खराब दिन को एतिके पढ़े कि हमर सब जगह साथ दवा बेसी तो चैप्टर नाही हमरा भीतर सॉरी जीव भीतर सारी बारी भी किछि नाही आ गोटे दी पेज ही अछि ठीक किंतु हमर ए जाय ही रखिबा लास्ट टाइम ए जाय हम रखिबा बेसी ने 30 मिनिट क्लास रहबो जेंति कि तुमको सुविधा हो को जिंस को कोन करिवो स्पेकुलेट करिया पे देखिया पे सब सुविधा हो ठीक आज पे एति कि धन्यवाद।